Hi everyone, Dr. ANSHUL here. And as we all know, the Neet exam is on 18th March 2024. So if somebody asks me, ki, Anshul, what is the most important point, to qualify Neet? So my answer will not be prep. My answer will not be using multiple books. My answer will not be revisions. My answer will be how you attempt the exam. करेक्ट बिकॉज अगर एग्जाम ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फिर नंबर कहाँ से आएंगे, है ना. तो इन दिस शॉर्ट वीडियो जस्ट अलाउ मी टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ आई अटेम्प्टेड द एग्जाम एंड व्हाट इज माय जनरल एडवाइस टू द स्टूडेंट्स. So the question now becomes, what is the magic number? How many marks you need to score that will basically assure you that you will get a government seat. So last year what happened was, at roughly 625 marks, up to 450 rank was there, and up to 500 the seats were allotted. Now I'll be talking only about all India quota and about the general seats, because after that there is a lot of variability. So at 400, at 625, you are getting a 450 rank, and up to 500 seats are allotted. Now every year the cutoffs are rising, so I'll take a safety margin of 10 to 15 marks. So the magic number in the current scenario would be 635. How you are getting it? Simple math says, if you do 175 questions correctly, you get a score of 700. So even if the rest of the questions are wrong, 65 questions are wrong, then even after getting minus 65 in them, you still have a score of 635, and you more or less assure yourself of getting a government seat. So this is the technique with which I have attempted all my exams, be it NEET, AIMS, or even the PSCs. So I give the paper in three parts, right? The first time I attempt the questions, I am 100% sure. Second time I attempt the questions of which I am 80 to 90% sure. Matlab I am not completely sure, but they are more than 50-50. Third time I attempt the remaining questions. Now the important thing is, as I demonstrated कि 175 correct चाहिए, 65 incorrect. The thing is, the less negative you have, the more liberty you have, right? Basically अगर 65 की जगह 40 ही गलत होते हैं, 170 में भी काम हो जाएगा. ठीक है, you need to minimize your negatives. So that means you should not attempt whole of the paper. I personally had 597 marks. Rank was 104, but that is immaterial because अब cut off change हो चुकी है. But I had 597 and I had attempted only 208. So just by attempting 240 does not mean you will get good marks, and if you have not attempted, it does not mean that you will not get the marks, right? 597 is a decent score, right? So minimize the negatives. The golden rule of entrance is, you get selected by correct questions, you get a good rank by minimizing the number of negative, right? So at that time I was like, I have to do 205 to 210 questions. So 208 था. Current scenario I would recommend, you have to go up to 225 to 235, right? Because again the cutoff is high, so इतना करना बनता है. Still you have the liberty of leaving 5 to 10 questions minimum. What happens is, when you leave those 5-10 questions, now obviously due to uh, using common sense, you will leave the hardest questions. तो what kind of questions you will leave? You leave the hardcore medical questions, वो question जिसका नाम सुना नहीं है. You leave the question जिसमें number पूछा है, because number में there is no recollection. Either we know it or either we don't know it, right? So automatically if you leave the 10 hardest questions, 50% stress reduce हो जाता है. तो first time I attempted 160 questions, right, which I was 100% sure. This number is important. अगर 160 सारे सही होते गाइस, तो मेरे 640 मार्क्स होते फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, राइट. एंड नेक्स्ट जो 48 अटेम्प्ट किए उसमें डेफिनेटली 20 और कुछ तो और सही हुए होंगे, बट दैट डज नॉट हैपन. वी मेक सिली मिस्टेक्स. 160 में से 160 से 640 बनते हैं इफ़ ऑल ऑफ देम वर करेक्ट, बट आई वुड हैव सर्टेनली
2022 और क्वेश्चंस क्या है कि गलत किए होंगे, तो वो 640 की जगह क्या हुआ, 140 सही हुए, 560 मार्क्स बने, प्लस 20 नेगेटिव भी आ गए, 540। सीली मिस्टेक्स, मैंने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन ठीक से यू नो जल्दी जल्दी कर दिया, आंसर की कई बार डिफ़र कर जाती है, ठीक है। Due to all those factors, you have to always take into account that even if you know 100%, even if you are sure, this is when your preparation is very good. Then I am telling you, even then your around 15% of your questions will be wrong. So in a paper which you know 100%, only 85% of your questions will be correct, and the next 5%, and again, and since there is negative marking, your percentage will further go down. So what you have to do is, in the second, after you have attempted the questions in the first go, then you do not revisit them, right? Jitna bhi number hua, you do not revisit them, because it is like when you mark the book, so you do not revisit those easy questions, right? Because you will start second guessing yourself, and you are only attempting which you are 100% sure, right? 80-90% भी नहीं बोला मैंने, 100% sure only that you are attempting, no matter how much the number. So this is your first phase. And as I told you, फर्स्ट फेज में मेरे 540 ही आए, राइट। तो द थिंग इज आई हैड टू रीच दैट 600 मार्क। सो दैट्स वाई टू कंपनसेट, आई न्यू कि 20-25 क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं इनएडवर्टेंटली। सो टू कंपनसेट दैट, नाउ आई हैव टू अटेम्प्ट 60-70 मोर, राइट। एंड द थिंग इज दोज वंस आई डोंट नो, तो जो 50-50 वाले हैं देन आई अटेम्प्ट, या जिसमें आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, तो नेक्स्ट आई अटेम्प्टेड 30-40 ऑड। तो अगर 30 वो होंगे, उसमें से लेट से 15-16 सही होंगे, 15-16 गलत होंगे। तो 30 में से अगर 15 सही है, व्हाट हैपन्स, 60 मार्क्स बन गए, 15 गलत है, 45, तो 585। तो आई स्टिल हैव टू गो अ लिटल बिट मोर, ठीक है। नाउ सी दिस, जो रिमेनिंग है ना, जिसमें हमें लगता है तुक्के मार देते हैं, +4 -1, 585 से वो 598 ही आया इन 13 क्वेश्चन। तो बहुत कम मार्क्स बनते हैं, एंड देर कुड हैव बीन अ गुड चांस कि वो नेगेटिव बनते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ऑल्सो एडवाइज डू नॉट अटेम्प्ट दी होल पेपर। तो हाउ मच रिमेनिंग क्वेश्चन यू अटेम्प्ट, दिस इज अगेन वो 225-230 number you have to reach, because first time you will attempt 150, 160, 170, 180 questions only, उसमें से 20-25 गलत है। 50-50 वाले करोगे, उसमें डेफिनेटली प्रोपोर्शन और कम होगा, ठीक है। यू आर गेटिंग कि यू हैव टू, दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट, तो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट द नंबर, ठीक है। आफ्टर योर फर्स्ट अटेम्प्ट यू देन सिलेक्ट द नंबर, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ ही जाता है ना कि दिस मच यू हैव आंसर्ड, मार्क्ड क्वेश्चन जो फाइनल सबमिट कर दिया है, राइट। तो डू दैट, एंड कंप्यूटर बेस्ड है, यू कैन एनी टाइम चेंज, इट इज़ नॉट लाइक OMR शीट, राइट, उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो कंप्यूटर बेस्ड है, यू ऑटोमेटिकली गेट हाउ मच आई हैव डन, यू डू क्विक मैथ्स, 170 की है, ठीक है। 170 में से मेरे अब 20 तो गलत हैं ही, तो मेरा स्कोर इफेक्टिवली 150 है। तो 150 इंटू 4 600, प्लस टेक दैट नेगेटिव इंटू अकाउंट 580, आई नीड टू गेट दोज 50-60 मार्क्स मोर, राइट। तो 60 मार्क्स 15 मोर क्वेश्चन से नहीं आएंगे, बिकॉज द क्वेश्चन यू आर लेफ्ट विद आर द वंस इन विच यू आर नॉट श्योर, वो डिफ़िकल्ट वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू अटेम्प्ट, एंड डू नॉट रीविजिट दोज फर्स्ट वंस। वो फिर थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट, वो तो यू विल कीप ऑन, मतलब जगलिंग बिटवीन क्वेश्चंस, कुछ आ जाए, कुछ एजुकेटेड गेस लग जाए, एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। बट दिस इज बेसिकली हाउ यू अटेम्प्ट। सो द की पॉइंट्स इज यू अटेम्प्ट इट लाइक इन सेगमेंट्स, इट्स नॉट कि पहला क्वेश्चन निकालना ही निकालना है। कुछ एग्ज़ाम्स में मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि मुझे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं आते थे। आई थिंक रिसेंटली हिमाचल वाले में ही हुआ है, एंड आई हैव क्वालिफाइड दैट रिटर्न वन, ठीक है। तो पहले 7-8 नहीं आते थे, तो इट डज़ नॉट मीन कि आई गेट डिप्रेस,
मुझे जो जो आते हैं मैंने फिर वो अटेम्प्ट किए, राइट। तो सिमिलरली, number 1, you attempt it in segments. Number 2, keep that maths in mind. Number 3, there is a minimum number of questions to attempt, which is 225 to 235. And number 4, you do not have to attempt the whole paper. Please do not make this mistake, right? So this is all from my side. So let me just finish by wishing all of you the very best for your exams. And last but not the least, but perhaps most important, do not deprive yourself of the sleep 1 day prior to exam. वो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है 2-3 घंटा एक्स्ट्रा सो जाओ, because it is the whole year which decides and not the last day. Plus, on the day of the exam, that is the most crucial. So you need to be the most alert and the most focused. So you should be very well rested, right? Have a good meal in the morning and take a good night's rest, and then you attempt the exam to the best of your capabilities. So all the best, guys. And those of you who don't know me, I also run a free MCQ group in on Telegram, so you are very welcome to join that. I post MCQ questions over there and frequently, and you can search it by the name Neet Prep MCQ group, or just by my name Anshul Tayal. I'll also add the link in the description. So thank you guys, and again, all the very best.